Students, yes or no? Students, is the audio and video fine with you all? Yes, sir. Yes, sir. So whenever you sit for the lectures, try to go to the part of the theory properly. Okay, you can go through your state board books also in that case. You can get refer your HC Burma also. You can refer your theory part from there first. Don't try to just crack with the questions first. Try to read the theory properly. Sit into the lectures in that case. Try to understand what exactly the problem speaking about, the concept speaking about. Go through certain solve examples. If the teachers throw certain questions, you try to crack it at that time. If they give you some homework, try to think over it. Avoid looking at the solutions to a great extent. Avoid looking at it. Don't be handicapped by looking at the solution straight away. That's very important in physics, we consider, as well as in all three, physics, chemistry, and maths. With consistency within Rapoge, that's more than enough. And the books which they have told you how to go about with it. HCV is the one which is one you have to consider. You have your own state board की book है और on the model और जो assignments सर देते हैं, that is more than enough. उतना अगर तुम एकदम strongly cover करते हो, if you do that strongly, that really will help you. उसके बाद में you try to go for it. यानी उसके बाद में you try to go for some different supplement material in that case. पहले जो तुम्हारा main diet है, उसको अच्छी तरह से absorb करके digest करके उसको assimilate करके digest करो पूरा. फिर तुम्हें पता चले कि हाँ चलो फाइन, अभी आई एम स्ट्रॉन्ग विद दिस. अगर यहाँ से मुझे कुछ भी पूछा, अगर मॉडल में से ये एक्सरसाइज में से मुझे कुछ भी पूछ लिया या एचसीवी में से कुछ भी पूछ लिया, विद इन 4 minutes 5 minutes I'm able to crack it, then you go for different material. Don't just go on adding materials to your study, students. कभी ऐसा मत करना. Don't go on adding materials. Try to have defined material कि ये मेरा material है, अभी for the time I need to, and gain confidence in physics. जितना तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे फिजिक्स के अंदर, उतना तुम क्लियर करोगे अच्छी तरह से. और कॉन्फिडेंस के अंदर यानी ट्राई टू आंसर इन फ्रंट ऑफ टीचर्स व्हेन दे आर टीचिंग यू, इन द एग्जाम्स ट्राई टू स्कोर योर मार्क्स. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द फर्स्ट टेस्ट यू मस्ट हैव गिवन इट. Many of them must have got good marks. Many of them must be dissatisfied, and that is nothing to worry about. It's not that it's a race in that case. This is just to know yourself. और शायद एग्जाम देने के बाद बहुत जल्दी रियलाइज भी करता, अरे यार मैंने कुछ ऐसा किया होता तो, कुछ वैसा किया तो. इट्स काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस मैच बिफोर योर वन डे इंटरनेशनल मैच जो फाइनल होता है, तो उसके पहले जो प्रैक्टिस मैच होता है, इट्स काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस मैच, लेकिन उसको सिंसियरली लेना जरूरी है. सो वन थिंग, नेवर मिस आउट लेक्चर्स स्टूडेंट्स. कभी भी लेक्चर्स को मिस आउट नहीं करना. यू गेटिंग इट? नेवर मिस आउट एग्जाम्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, and try to have your proper organized timetable to do your physics with that. Let's go for the question in that case. The first one. Now, if you look over here, they've given to you that a car. Please, is the board in all clear with you? The audio and video, is it fine? All of you? Pardon? It is perfectly okay. Okay, perfectly. Thank you. Now listen carefully, students. A car makes a displacement of S1 of 10 kilometers, we consider. Okay, and it's 10 kilometers due east, we consider. Okay, 10 kilometers towards east, then turns 45 degrees and makes a further displacement S2 of 32 kilometers towards northeast. Then the magnitude of its next displacement is. Now, when you look at the question, they've given to you is what? A car makes a displacement of S1. It's 10 kilometers due east. So you can see if I happen to show the direction. This is north, this is west. Let us say the car starts from point O. It moves 10 kilometers due east. Okay, this is 10 kilometers due east, I'll consider as per the direction. Okay, standard directions over here. Then it moves makes an then turns 45 degrees. अब मुझे बता turning 45 degrees का मतलब क्या हुआ? Suppose it reaches at point A, turning 45 degrees का मतलब क्या हुआ? 45 degrees यानी कहाँ से सुनना? Are you going to measure 135 away? Wait a minute. Are you going to measure 35 from here? Are you going to measure 35 from here? From right. Yes. The reason is why because तुम्हारा path सीधा जा रहा था, students. तुम्हारा path सीधा जा रहा था. अभी तुम बोला कि अगर किसी ने बोला कि भाई मुड़ जा 45 degrees, मुड़ जा 45 degrees, so you have to consider this one. This is your 45.
क्या ये clear हुआ everybody? Yes, Okay, sir. and always when you consider the measurement of an angle, we consider, please, or we consider the angles are measured with respect to what? ये west है, ये north है, ये east है, south है. East is considered to be as positive x-axis, I cap. This is minus I cap. This is j cap and minus j cap. We always try to go for angle measurement with respect to your positive x-axis as a reference line. क्या इतना clear हुआ सबको? Yes. Everybody, all the students who are within the lectures, please. Okay. Yes, sir. So now what exactly 45 degrees we consider is, so यहाँ पे now how much it is going, so it's going 30 root 2. So now if I have to go, this is 10 kilometers and this is 30 root 2. Degree. So now this is tail, head, Where exactly the resultant will be, students? BO. Yes. BO or OB? Sir, BO. BO. Yes, sir. Idea when you go for triangle law of vector addition, where exactly it is? Tail, head, OB. head. My resultant is from the vector to the head of the second vector. ये तुम्हारा resultant. Agreed? Is this clear with everybody? ये तुम्हारा, और हम लोगों ने क्या किया? Simple triangle of vector addition. अरे पूछा क्या उन्होंने? Then the magnitude of its displacement. इसका मुझे magnitude चाहिए, यानी मुझे इसका magnitude चाहिए. वो क्या होगा? So how do you go about its magnitude? So simple. If I want to go for its magnitude in this case, can you tell me what is the angle between the two vectors? 45. 45. How do you come to that conclusion? Ashutosh, you are the one who answered. Yes, sir. Okay. How do you come to that conclusion? The angle between the two vectors is 45 degrees. Sir, it is given in the question. No. Sir, It's because the head Sir. of the first vector is joined to the tail of the second vector. So it might be possible that we might have to parallelly shift the vector. So the 135 degrees becomes 45 degrees. Okay, that means do keep in mind whenever you speak about angle between the two vectors, please कभी भी अगर angle between the two vectors अगर तुम्हें चाहिए students तो क्या करता है? It's either the angle between the two heads, ये हमेशा ध्यान में रखना, या it's the angle between the two tails of the given vector. कभी भी एंगल मेजर करना है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो इन वेक्टर्स, जब भी एंगल मेजर करते हैं स्टूडेंट्स किसी दो वेक्टर में, तो ये ध्यान में रखना, या तो हेड्स कम मीट होगा तो वो तुम्हारा एंगल बन जाता है, या उसी के सामने अगर इसको मैं प्रोजेक्ट करूं फर्दर, इसको मैंने अगर आगे प्रोड्यूस किया, इसको भी ऊपर की तरफ प्रोड्यूस किया, तो ये जो एंगल हो जाएगा वो मेरा थीटा इज एंगल. अब यहाँ पे देखो, ये है हेड पहले वेक्टर का, और दूसरे वेक्टर का ये टेल है. इज इट द एंगल? नो. I told you very clearly, it's an angle between two heads or two tails. तो तुम क्या करोगे? तो ऐसा करते हैं ना, इसी वेक्टर को मैं आगे प्रोजेक्ट कर देता हूँ. तो कहने से now this vector is projected, तो उसका टेल यहाँ पे है, B का भी टेल यहाँ पे है. What is the angle between the two vectors? 45 degrees. Is this clear, students? Yes, sir. Yes. This point you have to keep in mind. ये भूलना नहीं, और ये बहुत हेल्प करेगा बहुत सारे प्रॉब्लम्स में. ये स्टूडेंट्स को एंगल मेजर करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि एंगल कौन सा लेना है. So always between two arrowheads meeting or two tails for two given vectors, and in that case, for that you can shift the vector also. You can shift the vector parallel to itself. We consider. Okay, so now we got the answer between the answer. इनके बीच में angle 30 degrees, 45 degrees हुआ. Can you find out the result? Yes. So what should I go for, students? Which formula I should use over here? Sir, square root of a square plus b So square that is plus 2ab cos t. Yeah, that is parallelogram law of vector addition, students, है ना? Yes. तो magnitude क्या होगा? Magnitude होगा sir under root modulus of a square plus modulus of b square plus twice modulus of a modulus of b cos of 45. अभी देखो, कोई स्टूडेंट्स को मॉडुलस में लिखने की आदत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, डायरेक्टली लिखो ना, a square प्लस, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्शन नहीं ले रहे, इसलिए हम या तो मॉडुलस में डालो या तो सिंपली ऐसे लिखो. अभी ये देखो, मैंने मॉडुलस आर लिखा, तुम आर भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट केस. लेकिन ये भी एक पैटर्न तुम्हें ध्यान में रखनी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स व्हेन दे स्टार्ट सॉल्विंग इट, दे फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट ऑफ इट, व्हेन ऑल ऑफ अ सडन थिंग्स आर कमिंग इन दिस मैनर, दे फॉरगेट, अरे यार ऐसा कुछ तो था पहले. बिकॉज़ व्हाट यू डू राइट नाउ स्टूडेंट्स, यू राइट नाउ, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ इन 2021, in the month of June and July, it has to be restored in 2023. 2023 तक you have to recollect it,
remember it, reflect it back into your answers in the form of options. So एक ये बड़ा लंबा process है students. Okay, so think in that manner and आराम से calmly you should consider that. तो ये तुम्हारा क्या होगा सर 2ab cos of 45. now फिर ये go कर हाँ सर ये तुम्हें 10 दिया है, ये होगा under 10 square. फिर ये क्या होगा, तो ये होगा 30 root 2 the whole square. 2 into 10 into 30 root 2. What is cos of 45 students? 1 by root 2. 1 by root 2. And can you solve it? And you'll get the answer for what? The resultant R will be equal to how much? You'll be getting 50 kilometers. Is this clear, students? Yes, Students, sir. is it clear to everybody? इसको तुम solve करोगे तो 100 plus this will be 900 into that is 1800 we consider. Multiplication of this we consider. Is that clear? Root 2 will get cancelled. This becomes 600. Addition of it, we get the answer as 50. Root of 2500. Is it clear with all the students over here? Yes, sir. See, when I'm asking, hardly one person. Yes, sir. Understand. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Or you can put in a text as simply yes. Doesn't matter if you don't want to. When I raise question to you, if you want to unmute in that time while responding this manner, you can just text it also. Yes, sir. Doesn't matter. At least because see, these online sessions are what मैं ही बोलते रहूँ और तुम सुनते रहो. It's not going to help you out. At least the parents also in the home who are moving here and there, उनको तो लगना चाहिए कि यार कुछ lectures हो रहे हैं. My kid is responding in that case. Okay, so try to have a pattern this way where you reply, you respond to all the teachers who are taking sessions in that case. That will really help you out. That makes your class more lively. And mind you, your online sessions is really an advantage. Because over here, it's a direct contact we can consider. किसी को पूछने तो बिंदास unmute करके हो गया. भले वो silliest of the question हो. And never to feel bad or never to feel ashamed. कभी भी जिंदगी में कभी ashamed मत करना कि यार मैंने ऐसा question पूछ लिया. Never. अभी तुम सीखने के process में students, you are in the learning process. You haven't done something new. No, you are not doing something new. You are in the learning process. तो learning process में गलतियाँ होगी. Rectify करो. उसको अच्छी तरह से समझ लो. हाँ, दोबारा नहीं होनी चाहिए. वो एक ध्यान रखना. The same thing should not be repeated again. Okay, shall I erase this once? Yes, sir. Okay, and please those who want to copy it down, those who want to copy this particular one, please let me know about it. I'll hold for a minute and when you finish up, you can tell me sir to erase it. Shall I erase this? अरे हाँ यहाँ तो बोलो. Yes, sir. Okay. Yes, sir. The next one. When you look at the next question, students, it's given to that if vector A plus vector B, students, given to that vector A plus vector B is equal to 0 दिया है, 0 vector we consider. पूछा गया है angle between the two vectors. Angle between the two vectors. Okay, so angle between vector A and vector B. And the options are given to you 0, 45. You have the question paper in front of you. 0, 45, 90, 180. अभी मुझे पता how to work out with this. कैसे करोगे इसको? Anyone who knows it? Anyone? A plus B is equal to 0. Angle between vector A and B. Sir, Yes. sir, we can use the same formula as we used in the previous one. Okay. So A plus B is equal to 0 can only be possible when A is equal to B and both are in the opposite direction. Okay. So if we take A plus B is equal to 0, we can assume that A is equal to B. So we can take 2A is equal to 0. And when we do this, we get that 2A plus 2A cos theta
that is 2a plus 1 plus cos theta under root. So 0 square would be 0. And when we solve it, we get that cos theta is 180 degrees. That means they're in the direction opposite. Yes, sir. Okay, now see, there are ways in which you can consider. See, he actually proved it by mathematical. Like when the students look into this, how to go about this? Summation of two vectors is equal to 0. अभी बताओ ये है क्या चीज स्टूडेंट्स? क्या चीज है ये? तुम बोलोगे सर सिंपल ट्रायंगल लॉ है सर. ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है. अभी तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे a plus b equal to 0 है. इट्स अ नल वेक्टर वी कंसीडर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है. तभी कैसे करोगे? सपोज अगर मैं वेक्टर a ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से सुनो. सपोज अगर मैंने वेक्टर a ड्रॉ किया, ये वेक्टर a लिया. लेट अस से आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट x1 एंड गोइंग टू पॉइंट x2. अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, इसके साथ में मैं क्या वेक्टर ऐड करूंगा या सबट्रैक्ट करूंगा तो मुझे रिजल्टेंट वापस मुझे 0 मिलेगा. So the same vector with the equal magnitude but in opposite direction. Very good, very good. No, that's what it is. यानी इसके साथ में मैं क्या ऐड करूँ so that मुझे रिजल्टेंट 0 मिलेगा. तो रिजल्ट 0 तुम बोलोगे सर x1 to x2 वेक्टर है, आप तो बोले इसके साथ में क्या ऐड करोगे? तो सर ऐसे करो ना, इसका डायरेक्शन रिवर्स कर दो. ये क्या हो जाएगा? है ना? देखो दोनों का लेंथ ऑफ द एरो सेम है. लेंथ ऑफ द एरो सेम है. हाँ सर ये लेंथ ऑफ द एरो सेम है. उसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड आर सेम. दैट मींस the two vectors A and the other one we consider is this is my vector B now because I have taken in this case the vector B. Can I say the two vectors A and B, can I say they're equal in magnitude? But are they in the same direction or opposite direction? So they are in the opposite direction. क्या ये clear हुआ? Yes. Agreed? Can I take this on the other side? What is my answer? 0. Is that clear? So what exactly the angle between the two vectors we consider is, since they're in the opposite direction, and whenever two vectors are in the opposite direction, everybody listen carefully, whenever the two vectors are in opposite direction, how to find out the angle? So they are anti-parallel. ये देखो दोनों anti-parallel. Anti-parallel का मतलब opposite direction. तो इसका angle कैसे निकालोगे? Angle कैसे निकालोगे? सर इसके पहले वाले प्रॉब्लम में आपने बोला था angle between two vectors निकालना है तो either it is between two heads और between two tails. लेकिन सर ये टेल तो इसके है तो करो ना, इसको शिफ्ट कर दो ना पैरेलल. मैंने बोला कि अगर मुझे एंगल चाहिए तो वेक्टर्स को तुम शिफ्ट कर सकते हो. अब देखो ये वेक्टर को शिफ्ट करके मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ. What is the angle between the two vectors? Sir, it's a straight 180. Pi radian, which is also equal to pi circular, which is equal to 180 degree. Is this clear? Is Yes, this clear? Secondly, what exactly the one who answered it? He also gave a correct approach in that case. उसने क्या बोला करके? उसने ये बोला कि सर अगर उसको 0 चाहिए तो मेरे डायरेक्शन ऑफ भी ऑपोजिट होना चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए. तो अगर सपोज मैं लेता हूँ रिजल्टेंट इफ आई हैव टू कंसीडर दिस केस will equal what? Under root a square plus b square plus 2ab cos theta we consider. और देखो मेरा रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? 0 आना चाहिए, है ना? क्योंकि मेरा रिजल्टेंट 0 है. इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनना. मैं यहाँ पे खड़ा हूँ. I am walking 4 meters in this direction and I am coming back 4 meters in this direction. What is my displacement? 0. And displacement is a vector. तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, तुम्हारा रिजल्टेंट 0 आ गया. Squaring both the sides, तो ये हो गया a square. This is your vector. A and B are same. Yes. This is also 2a square cos theta. तो देखो ये क्या हो जाएगा? So 0 is equal to 2a square plus 2a square cos theta. 2a square इस तरफ ले लो तो कैसे 2a square cos theta is equal to minus 2a square. What is cos theta? -1. So cos theta is -1. So कैसे theta will be cos inverse of -1. Which angle give me cos inverse of -1? Or 180 degree. 180 degrees or pi degrees. क्या ये समझ में आया students? See, there are ways in which you can solve this question. Yeah, is this clear with everyone, all of you all? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो ये सब ध्यान में रखना how to go about with this in this case. और जब भी तुम angles find out करते हो तो cos theta we consider -1. A student should know all the values of cos. Suppose if I ask you, can you give me the value of cos of 135? Sir, -1 by root. Absolutely correct. You're getting it. Cos of 120. Sir, -half. Yes, these are all negative values to consider. So that's what a student should keep in mind. Is that clear?
Okay, shall I go on to the next question, students? Can I erase this? Yes, sir. Yes, sir. Next question, students. Now the given to us vector A is equal to minus root 3i plus j cap. Okay. Then angle made by vector A, angle made by vector A with respect to positive x-axis. Students, WRT का मतलब with respect to, and maybe those students who are right now in front of me, 21 is a strength right now. तो 21 में से जो भी students है शायद तुम्हारे हाथ में question paper होगा या तुम्हारे सामने कोई दूसरा screen होगा जहाँ पे question paper होगा in that case. So please try to observe that also simultaneously. अगर नहीं है no problem, I'm putting it down over here. तो listen carefully, think properly. Okay, जहाँ पे तुम्हें लगता है कि नहीं ये मुझे copy करना है तो मुझे बोलना, that is what I'll hold for a minute in that case. Copy it down in that case. Okay, written, remember. Not written, not remember. It's all forgotten. Do keep in mind. So angle made by vector A with respect to positive x-axis. यहाँ पे options दिया है 150, 150 degrees, 30 degrees, 120 degrees, and 60 degrees. Yes. Any one of you. Sir, here we can use the formula of cos alpha. Cos alpha. So what is it? So, sir, we can use that cos alpha is equal to the A vector upon magnitude of A vector. Okay. Okay. First of all, can you tell me where exactly this particular vector A will be? Sir, A would be in the negative side, minus I cap side. Okay, so that will be considered as this is I, this is minus I, this is J, and this is minus J. Now, when I say minus root 3i plus j, we consider. So I'll consider this is minus root 3. Let me take this as minus root 3. Okay. And this is I consider. Can I say if I happen to go for it, this becomes my vector A? Yes, sir. Okay. ये होगा मेरा vector A. Second quadrant में आएगा. Agreed. This is minus root 3i, and this is j. Now he's trying to say that is he's going for this as alpha. So are you going for direction cosines? Yes, sir. So when we get alpha, we can subtract 180 minus alpha to get the angle. Absolutely correct. So now if I happen to go for what is cos of alpha, लेकिन cos of alpha होगा तो hypotenuse तो मुझे नहीं मालूम. Tan alpha. Sir, डायरेक्टली मिलता है ना तुम्हें. अगर तुम यहाँ पे अगर ये अल्फा लेते हो स्टूडेंट्स, अल्फा लेते हो, and if I'm going for simply magnitude in that case, I will not go for minus root 3. I'll go for 1 by root 3. Students tell me what is tan alpha? What is tan of 1 by root 3? Which angle is tan of 1 by root 3? We consider as tan of which angle? 30 degree. 30. तो ये कितना होगा? थीटा कितना होगा? 30 डिग्री होगा. अगर ये 30 डिग्री हुआ तो what exactly angle with respect to the x-axis is how much? 150. That's why option will be how much? 150. या सेकंड वे कैन कंसीडर दैट इज व्हाट tan इनवर्स. अगर तुम देखोगे मैं ध्यान से देखना, अगर मैं tan थीटा लिखता हूं opposite upon hs में आप कंसीडर दिस that means my angle now this is alpha I'll consider, this is theta I'll consider. I want to find out with respect to x axis. So now when I consider in this case it will be opposite upon hs will be considered. It's opposite upon hs I'll consider in this case. So now when I go in terms with negative अगर मैं जाता हूं negative में जाता हूं तो क्या होगा? So tan theta is equal to minus 1 by root 3. So theta will be equal to what? Tan inverse of minus 1 by root 3. What is tan inverse of minus 1 by root 3, students? 150 degrees. It's a supplement. Is this clear, students? Yes, sir. Okay. Sir, can you please keep it 1 minute? Pardon? Can you please keep it 1 minute? I want to copy. Okay, wait.
This is 150. Students, please. Done, sir. Thank you. Okay. Next question, students. Now, what's given to you is that modulus of A plus B is equal to modulus of A minus B. Listen carefully. Modulus of A plus B is equal to modulus of A minus B. This is given to you, okay, for the two vectors of non-zero magnitude. यानी दिया है magnitude of A and magnitude of B are not equal to 0. Non-zero magnitudes. Then which of the following must be a correct statement? Now, the correct statement we are trying to say is what option is modulus of A is equal to modulus of B. Second, they've given you that vector A is perpendicular to vector B. Third is A plus B will be equal to a null vector 0. Then vector A is parallel to vector. These are the four options. A, So, It's gonna be perpendicular. it is perpendicular. perpendicular. Okay, anybody else other than Harsh and Ashutosh? Anybody else who can answer for this? Now, Harsh, Vasa, and Ashutosh, you will be only told to speak when asked. I want others also to now start replying. Yes, anybody else? Anybody else? Yes, sir, may I? Yashavardhan, Aditya, Vyom, Vatsal, Trai, Tanmay, Tanay, Ruchab. Anyone? Sir, can you hear me? Yes, Vansh. Actually, you are the one who is answering. Yes, sir. Bolo. Sir, so we know that the resultant is square root of a square plus b square plus 2ab. That's for a plus b. And for a minus b, we have the resultant a square plus b square minus 2ab cos theta. So if we need to remove the last factor 2ab cos theta, then we need to have cos theta as 90 degrees. Sorry, 90 degrees, which is 0. Okay. So in the end, we'll get square root of a square plus b square as the resultant. So if they have to be equal, cos theta should be 0. Absolutely correct. Now That's see, directly perpendicular. ये है क्या मालूम है? A और B vector दिया, A और minus A. इसका मतलब हुआ क्या students? See, many students when they give you this manner, they try to struggle in these things. Okay, what exactly? How to go about with it? तो ये students जो modulus बना उसका मतलब ये magnitude है, ये भी magnitude है, ये सामने वाला difference है. यानी उसका मतलब ये है ध्यान से सुनना, listen carefully. अगर suppose मैं अगर मेरा इसको solve करूँ पूरा तो magnitude of A plus B का मतलब क्या होगा? सर A plus B if I have to go for यानी resultant R होगा. तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला होगा सर अंडर रूट इसके लिए magnitude of this B होगा A square plus B square as if we said it 2AB cos theta. Is that clear? So in that case, I'll consider that means let us say the angle between A and B I'll consider be theta. Okay, so ये theta होगा. लेकिन अगर मैंने opposite direction में लिया उसका मतलब ध्यान से सुनना. Please pay attention to this. ये है तुम्हारा वेक्टर है. Everybody listen carefully. ये है तुम्हारा वेक्टर B. और अगर सपोज मैंने ये थीटा दिया तो मुझे बताओ क्या ये फॉर्मूला इसके लिए सही जा रहा है? Oh, sir. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये तो सबको मालूम है. all 22 स्टूडेंट्स को अभी सबको पता है. हां सर इसका फॉर्मूला ये आ जाएगा. आई एम स्पीकिंग अबाउट फॉर दोस स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू क्रैक इट. इट्स फॉर देम आल्सो टू गेट इट. तो ये होगा तो सर इनका रिजल्टेंट किस तरफ होगा? सर इनका रिजल्टेंट अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं पैरेलल तो मेरा एक पैरेललोग्राम बन जाता है. तो ये होगा मेरा रिजल्टेंट. एग्रीड? ये हुआ मेरा रिजल्टेंट. और रिजल्टेंट में कैसे लिखूंगा? a + b. लेकिन एंगल थीटा है. अभी हम क्या करते हैं? a - b निकालते हैं स्टूडेंट्स. तो क्या करूंगा मैं? सर ऐसा करते हैं b का डायरेक्शन से रिवर्स कर दो. है तो b, ये जो है वो यही है लेकिन सिर्फ कस्टमाइज हो गया. इसका डायरेक्शन रिवर्स कर दो. यानी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन ऑपोजिट. तो मैं इसको भी कैसे ड्रॉ कर लेता हूं? लेंथ ऑफ द एरो और इसका लेंथ एग्जैक्टली सेम होना चाहिए. लेंथ दोनों का सेम होना चाहिए. अगर देखो ये थीटा आ गया तो ये कितना हो जाएगा? सर ये तो पूरा सप्लीमेंट्री हो गया. तो ये होगा पाई माइनस थीटा.
क्या इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी इनका रिजल्टेंट किस तरफ जाएगा? तो बोला सर ये भी तो एक पैरेललिज्म बन रहा है, इसको शिफ्ट कर दो पैरेलल, ये हुआ शिफ्ट कर दिया मैंने पैरेलल, टेल है, मेरा रिजल्टेंट किस तरफ है? अभी इस रिजल्टेंट को कैसे लिखोगे? तो इस रिजल्टेंट को I'll write down in terms of vector A plus into bracket minus vector B. What is my answer? A minus B in vector form. क्या इतना क्लियर हुआ एवरीवन? डायग्राम क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? सर यहाँ पे तो a स्क्वायर है, आ गया। हाँ सर, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट्स, ये मैग्नीट्यूड है, यानी ये माइनस बी नहीं लेना है, माइनस बी इसका डायरेक्शन दिखा रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैग्नीट्यूड हम लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड में क्या करोगे? तो यहाँ पे सिंपली बी स्क्वायर आएगा। अगर स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला नहीं याद रखता है तो कैसे करोगे? प्लस 2ab cos of pi minus theta. What is the angle between the two vectors? 180 minus theta है ना स्टूडेंट्स? समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? ये इसको Vatsal or somebody who answered right now, what did he say? He said it's a resultant of a minus b is a square plus b square minus 2ab cos theta. उसका मतलब स्टूडेंट्स, what is cos of pi minus theta? Minus cos theta. क्या ये समझ में आया सबको? Yes. और ये तुम्हारा कौन सा होगा? बेसिक मैथ्स में किया होगा। You must have done it in calculus part of it. You have to go cos of a minus b. What happened? Yes, sir, we have done. You have done, isn't it? Yes. It's minus cos theta. Now students पूछा क्या angle between अब क्या करोगे सर? अभी एक वेक्टर है, वेक्टर के क्या एंगल आएगा? तो देखो दोनों को इक्वेट कर दो, r तो दोनों में सेम है, दोनों को इक्वेट कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर इसको और इसको मैं दोनों को स्क्वायर कर दूं तो मेरे को यहाँ पे क्या होगा? सो दिस विल बी a square plus b square डिवाइडेड plus 2ab cos theta is equal to a square plus b square minus 2ab cos theta. Again a square gets cancelled, b square gets cancelled, minus 2ab को यहाँ पे लेकर 4ab cos theta हो जाएगा। Therefore that is equal to 0. So can I say students cos theta क्या हो जाएगा? 0. Cos of which angle will be 0? 90. Cos of 90 degrees is 0. So can I say theta will be equal to how much? यानी a और b कैसे होगा स्टूडेंट? ध्यान से देखो, ये मेरा वेक्टर है, ये मेरा वेक्टर b, ये दोनों 90 होगा। प्लीज पे अटेंशन। तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे जाएगा। अगर मैंने इसका डायरेक्शन ऑपोजिट ले लिया तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे आ गया। ये रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट दोनों का मैग्नीट्यूड भी एग्जैक्टली सेम becomes होगा। Again, magnitude of both of them, but the angle between A and B we consider will be equal to 90. That means ये एक point ध्यान में रखना। When exactly the resultant, when exactly the magnitude of resultant of two vectors is equal when the two vectors are mutually perpendicular to each other. क्या ये clear हुआ students? सर अगर यहाँ पे a प्लस बी का होल का मैग्नीट्यूड ढूंढना है ना, तो अगर a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड ढूंढना है तो नहीं, क्या बोल रहे हो? What are you saying? सर यहाँ पे a डैश प्लस b डैश होल में मतलब वो मैग्नीट्यूड के ब्रैकेट्स की है ना, हाँ तो उसको ये फॉर्म में लिखा है मैग्नीट्यूड में। हाँ सर, पर अगर उसकी जगह a डैश वो मैग्नीट्यूड के ब्रैकेट्स प्लस b डैश वो वाला वैसा होता है। सर हम लोग वेक्टर है, ये जो रिजल्ट है देखो यहाँ पे देखो, क्या ये दिख रहा है तुम्हें? रिजल्टेंट r बार इज इक्वल टू a बार माइनस b बार, ये दिखाई दे रहा है तुम्हें? हाँ सर। ये वेक्टर फॉर्म में, और a डैश मत बोलो, a वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर r ऐसा बोलो। तो ये तुम्हारा a माइनस b हुआ। अगर अभी मुझे किसी ने पूछा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड ये होगा भाई भैया। इसका आंसर, उसका मैग्नीट्यूड ये होता है सर। वो अच्छा सर, हाँ सर, वो मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस मॉड ऑफ वेक्टर b ऐसे अलग अलग होता तो वैसे पूछ रही हूँ। हाँ, मॉड ऑफ वेक्टर तो उसका मतलब
अगर सर इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुना, उसका मतलब सपोज अगर मैंने वेक्टर ये दिया, ध्यान से देखा, वेक्टर से अगर मैंने लिया 3 मीटर प्लस 3 मीटर जे कैप, अब ध्यान से ये मैंने दिया वेक्टर ए प्लस 3 मीटर जे कैप, उसका मतलब क्या है? तुम बोलोगे सर वेक्टर ए 3 मीटर पॉजिटिव एक्सिस पे है, हाँ कि ना? नाउ सपोज इफ आई से व्हाट इज मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, तो क्या बोलोगे? समझ में आ रहा है? सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड बोला, डायरेक्शन नहीं दिया। समझ में आ रहा है? मॉडुलस है ये सिर्फ इसका ये होगा मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ ए दैट विल बी डिफरेंट। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Can I erase this now? Can I erase this, students? Yes, sir. Sir, 1 minute. Okay. Students, Yashovardhan says he can't hear me properly. The rest of the students, can you hear me properly? Yes, sir. So please text it in the chats so that everybody reads. Don't give me a direct message. Give it to everyone. Sir, when you are Sir, going to listen that आपकी side, आवाज़ you थोड़ी- are a little bit inaudible. Yes, What? sir. What? Sir, middle आपकी आवाज़ थोड़ी When you कम are हो गई going थी। to the other side, you are a little bit Okay, fine. inaudible. Okay, no problem, Yashovardhan. Now, can I erase it, students? Can I erase now, students? Yes, sir. Okay. Okay, students, next one. Now, given to you that a plus b plus c is equal to 0, that is the given in terms of modulus of vector a plus vector b plus vector c is equal to 0, and modulus of vector a is equal to b. And that is given to you as 10 units. Okay. The question asks is the angle between A and B. Sorry, angle between A and B is given to you as 60 degrees. Question asks is find the magnitude of C. And the options are given to you 10 units, 10 root 3 units, 20 units, and 0 units. A plus B plus C is equal to 0, and modulus of A is equal to modulus of B, which is equal to 10 units. And the angle between the two vectors A and B is equal to 60 degrees. Students, find out the magnitude of C. Sir, it is B, 10 root 3 units. Sir, Okay. it is 10 root 3 units. 10 root 3. How do you go about with this? Anyone? Sir, can I? Yes, follow. Sir, so it is given that A vector plus B vector plus C vector's whole magnitude is equal to 0. Okay. So, according to triangle law, it can only be possible if all the three are in the same order and C vector's head touches A vector's tail. So,
go about by that. So A and B's angle is 60 degrees. So then we can find that minus C's magnitude is equal to root of A square plus B square plus 2AB cos theta. Then we get that minus C is equal to 10 root 3. So the magnitude of it cannot be negative. So it is 10 root 3 units. Okay, fine. Now, मुझे ये बताओ, you said it that the three vectors should be of same order. What does that mean? Sir, they should be in continuous order. So if A's head touches B's tail, B's head touches C's tail. Okay. Now, And can I C's head will consider? touch A's tail. So can I consider that to be a closed polygon? Yes, sir. Yes, sir. यानी students ये बताया गया है, ध्यान से देखो, and if in case if I see that the summation of all three should be equal to 0, should these three vectors lie in different plane or they should be in same plane? Sir, they should be in the same plane. And should they be that means they are coplanar vectors? Yes, sir. They should be concurrent or they should not be concurrent? Now come back to this and come speaking about this. Now listen carefully. Suppose अगर मैंने एक diagram दिया जहाँ पे मैंने vector A ऐसा दिया है, okay? I'm giving you this is vector A in this case, okay? Let us say another vector I'm giving you in this manner, a closed polygon, vector B, and vector C I'm giving you in this way. So can I say it's forming a closed structure? Is Yes. it if I consider these three vectors are given to you and all these three vectors act on the same plane, okay? Then the resultant of this is what? That is A bar plus B bar plus C bar will be equal to 0. But probably that is they should be coplanar. They should be coplanar. That means lying in the same plane we consider. Is that clear? And they should be, of course, they should be concurrent. अभी देखो इसको how do I consider this? इसी को अगर suppose मैं एक ऐसे draw करता हूँ, ध्यान से देखना students. ये सोचो कि ये मेरा platform है, okay? ये मेरे these are the base of the platform, okay? And now I have a block, an object, और इस ऑब्जेक्ट को मुझे पुश करना है. तो मैंने क्या किया, मैंने तीन फोर्सेस को अप्लाई करना शुरू कर दिया. अब ये सोचो मैंने एक फोर्स जो लिया है वो इस तरफ मैं एक्ट करवा रहा हूँ और इसको मैंने नाम दे दिया F1. एग्रीड? F1 ये फोर्स अप्लाई यहाँ पे हो रहा है. एग्रीड? दूसरा force if I have to consider, I can take it in one direction. I can consider. I can take it now. Suppose if I take it in this manner, I can take the other way around also. Three mutually perpendicular to each other also I can consider. So I can take it in this manner also. Agreed. F2 we consider, but it's make it more slant and make it more slant. Let me take in this manner only. Okay. If I have to go for P in this manner, that means I'm trying to make it to act a force in this way. Let me take this as F2. The third is I'm trying to go for in this direction. That is F3. Look at all these three forces. Are all the three forces are acting on the same block? Yes. Are they acting in a given plane? Yes. अगर मैं plane को define करूँ, तो मेरा कौन सा plane है? Let me assume it to be what? अगर suppose मैं यहाँ पे एक axis draw करता हूँ, ये एक axis में draw करता हूँ, ये मेरा कौन सा हुआ? XY plane हुआ कि नहीं हुआ? Agree, students? Yes, sir. And these are three forces acting at a given point we consider. तो ये क्या बन गया? ये concurrent forces हो गए. इनका summation can be considered to be equal to 0. Exactly corresponding to this. लेकिन अभी यहाँ पे क्या दिया गया है कि angle between A and B 60 degrees. अगर इसी का मैं angle लेता हूँ, यहाँ से अगर इसी diagram को मैं वापस draw करता हूँ बड़ा वाला, ये vector है. Please listen carefully, students. ये है vector B. Angle between A and B 60. तो can I say angle between A and B का मतलब क्या हुआ? So my B should be in this manner and this is my angle. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. Because Yes, I told sir. you angle between two vectors is either angle between two heads or angle between two tails. तो अगर ये 60 है तो ये कितना हुआ? 120. Agreed? So now can I say what is the resultant? So tail, head, tail, head. What is my resultant? My resultant should be tail of the first vector to the head of the second vector. I getting it? Tail of the first vector to the head of the second vector. यानी actually मेरा resultant इस तरफ होना चाहिए. देखो students, मेरा resultant इस तरफ आना चाहिए. लेकिन दिया क्या है मुझे? दिया क्या है? सर ये मेरा opposite direction में है. It is anti-parallel.
इट इज एंटी पैरेलल, यानी इसको अगर तुम देखोगे और इसको देखोगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, magnitude same, but simply they are in the direction opposite. Yes, Ashwar. I get. So it's a plus b we consider and minus c is the one we take as that is equal to 0. So यहाँ पे if I consider what exactly they're telling you to find out magnitude of c we consider, so simply go for what? And do you know it? But to find out the resultant. अगर इन दोनों का मैं result लेता हूँ तो ये मेरा resultant इस तरफ आ गया. Find out sir now. So what is the resultant answer? So my answer will be equal to what? Will be under root a square. That is 10 square. Plus b square, 10 square, plus 2 into a into b. What is the angle between the two vectors? Cos of 60. Students, what is cos of 60? Sir, half. Sir, half. Half. So ये half आ जाएगा. 2 and 2 will get cancelled. Agreed. तो ये क्या होगा? 100 plus 100, 200. Aggregate plus 100 कितना होगा? 300. So that is 100 into 3. So can I say my answer will be 10 root 3? Yes, तो ये क्या हुआ? ये मेरा resultant हुआ. Resultant यानी ये हुआ. लेकिन मुझे बताओ स्टूडेंट्स इसका डायरेक्शन क्या होगा? सर डायरेक्शन इज ऑपोजिट, क्योंकि हमें क्लोज पॉलीगॉन में दिया हुआ था, तो इट्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट क्योंकि समेशन इज गिवन टू यू. तो दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर का मैग्नीट्यूड इज 10 रूट 3. आंसर इज 10 रूट 3, बट इज द डायरेक्शन ऑपोजिट? यस. वही डायरेक्शन ऑपोजिट तुम कैसे निकाल सकते हो? सर ये भी तो दिया है ना आपको, आंसर देखना a plus b plus c is equal to 0. तो कहने का स्टूडेंट्स C bar is equal to minus A bar plus B bar. Yes, sir. है ना? Yes. तो कहने से C vector है, that will be always in the direction opposite to n. to A plus B. तो देखो A plus B का आंसर मुझे ये मिला, but it has to be in the direction opposite. क्या ये क्लियर हुआ all of you all? Yes, sir. Sir. Shall I erase this? Shall I erase this, students? Yes, sir. Yes, sir. Okay, the next question, students. Yashovardhan has posted so many statements. Good, Yashovardhan. Okay, now the next one, students. Okay, the resultant sum. If the resultant sum R bar of two vectors A and B is such, resultant R bar of two vectors A and B, A plus B is equal to R bar, is such that vector R is perpendicular to vector A and given to you magnitude of A to magnitude of B. The ratio of magnitude of A to magnitude of B is 1:2. Question asked is angle between vector A and vector B. Options are given to us 120 degrees, 150 degree, 90 degree, and 60 degrees. देखो ध्यान से देखना, दो वेक्टर दिया है, उनका रिजल्टेंट आर है. ये तो सबको पता है, ये तो ट्रायंगल लॉ से हो गया. वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल रिजल्टेंट मिलेगा टेल है, रिजल्टेंट विल बी टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर. लेकिन उन्होंने क्या बोला कि मेरा रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर टू वेक्टर है. यानी अगर कोई स्टूडेंट्स ड्रॉ भी करना चाहे तो तुम आराम से कर सकते हो. सर ये मेरा वेक्टर ए हुआ, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, मुझे रिजल्टेंट परपेंडिकुलर चाहिए, तो चलो ना रिजल्टेंट बना दो. मेरा दूसरा वेक्टर कौन सी डायरेक्शन होगा? सर ऐसे ही आएगा ना, हेड ऑफ ए टू. अब देखो व्हाट इज द वेक्टर. ध्यान से सुनना, मेरा वेक्टर ए क्या था? सर ये वेक्टर ए का टेल और ये हेड आ गया. दूसरा वेक्टर बी है तो सर उसका टेल इधर आएगा, ये हेड यहाँ पे है. रिजल्टेंट किस तरफ जा रहा है? सर रिजल्टेंट विल बी टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर.
ये मेरा रिजल्टेंट हुआ। क्या ये क्लियर हुआ? इज इट परपेंडिकुलर? हाँ सर, ये तो परपेंडिकुलर हो गया। अभी क्या दिया उन्होंने? रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज 1/2, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। नाउ स्टूडेंट्स, इफ आई वांट टू फाइंड एन एंगल बिटवीन ए एंड बी, angle between A and B, vector A and B, how to find an angle? Is it between two tails, two head, or between head and tail? Sir, between two tails. Okay, yeah, two heads. Between two tails or two heads. अभी देखो इसका head यहाँ पे आ रहा है, उसका tail, तो can I produce this forward? Yes sir. यानी actually मेरा vector ये है, इसको मैं produce करूँ, तो देखो ये vector यानी मुझे ये angle पूछा है। Now anyone. Sir. Ratio is given to you. Ratio of A and B is given to us 1:2. Sir. Sir, in this kind of triangle where the base, where the ratio is 1:2, the other side's ratio is √3. So if we see like that, so the triangle's ratio is 1:√3:2. In such a way. So when we find by that way, we get cos theta, the angle between A and B, to be 1/2, that is 60 degrees. And then if we subtract it 180 minus 60, so we get it as 120 degrees. Absolutely correct. Getting it, Ashwardhan is also got the answer. See, इसका fastest way कैसे है? तुम्हें magnitude दिया, ध्यान से देखना, magnitude का मतलब क्या दिया? सर आपको So ratio basically, दिया। we'll just do this thing, sum of the angles in the triangle, because you're given 1:2, and then it will correspond to the opposite, the angle opposite to the side. So the angle opposite to the 1 will be 30 and the 2 will be 60. Okay, fine, that's absolutely correct. You have to go in that manner only. Magnitude of A और magnitude of B दिया 1:2, the fast way यानी A upon B, यानी अगर मैं इसको easy तरीके से देखूं तो उसका मतलब क्या दिया है? सर मुझे ये, अगर मैं एंगल, सपोज अगर मैं एंगल थीटा पकड़ता हूँ, चलो ये वाला पकड़ो मैं थीटा, तो अगर थीटा लिया है तो स्टूडेंट्स कैन यू टेल मी व्हिच ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म विल गिव मी अ रिलेशन बिटवीन एडजेसेंट एंड हाइपोटेन्यूज? Sir, cos theta. Cos theta. तो तुम्हें दिया गया है cos theta is a ratio of what? A/B, adjacent upon hypotenuse, ये तो पता है कि नहीं? ये अगर मैंने cos theta लिया, I have to go for the magnitude A and B, A/B, A/B का रेशियो कितना दिया? 1/2। क्या ये दिया कि नहीं दिया स्टूडेंट्स? अगर Yes, cos sir. theta is 1/2, तो what is this angle? What is cos theta will be? How much? 60 Cos of which degrees. angle? Sir, 60. 60, ये हुआ 60। अगर स्टूडेंट्स ये हुआ 60, ये पूरा 180 है, तो ये कितना बचा? 120. What's your answer? Students, is this clear? Yes, Sir, this sir. could also be solved by parallelogram law, no? Yes, of course, we consider in that case. Second way, second approach. Answer to second approach. Second approach की हिसाब से अगर मैं देखूं, तो can I try to go for components of B? Component of B, which is in the direction of R. Agreed. And one is in the direction A, but in the direction opposite. Component of B in the direction of R, and in the direction B we consider. और उनका फिर रेशियो ले लो, B upon A का रेशियो. You can get your answer accordingly. यानी इसका सिर्फ कंपोनेंट ले लो, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. प्लीज स्टूडेंट्स ध्यान से देखना. अभी सेकंड डे यही डायग्राम को अगर मैं कंप्लीट करता हूँ, ये परपेंडिकुलर लिया, रिजॉल्व दिस, ध्यान से सुनना, रिजॉल्व दिस B into two components mutually perpendicular to each other, resolution of vectors. तो ये होगा. दूसरा, अगर मैं इस तरफ लेता हूँ तो ये होगा. एग्रीड. अगर ये 60 है तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स ये क्या होगा? सर ये होगा B cos 60. एग्रीड. ये क्या होगा? सर ये होगा B sin 60. एग्रीड. लेकिन B cos 60, कैन आई से B cos 60 is in the direction opposite to A? Yes. B cos 60, we consider, sorry, B cos 60, yeah, B cos 60 is in the direction opposite to what we consider? A we consider. Are you getting it? Or I can consider in terms of theta. चलो मैं 60 नहीं लेता, मैं theta लेता हूँ. चलो ये मुझे नहीं पता in that case. I'll consider this case. So I can consider this case. तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? सर opposite होगा. अगर मैंने theta ले लिया स्टूडेंट्स, तो मेरा आंसर क्या होगा? Opposite to A. So what is cos theta? I'll consider minus A by B. So what exactly theta will be? Cos inverse of minus A by B. What is A by B given to me? 1/2. What is minus 1/2 students? 120 degree. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये कंपोनेंट के हिसाब से हम लोग है. सेकंड वे करेंगे, लेकिन ये सबसे फास्टेस्ट है. अभी तीसरा मेथड, तीसरा मेथड
तीसरे मेथड के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, प्लीज पे अटेंशन। अब look at the third method, please pay attention. If you look over here, ये मेरा वेक्टर यहाँ पे आ गया, ये मेरा वेक्टर बी है, इसको मैंने शिफ्ट किया तो ये मेरा रिजल्टेंट आ गया. That means students, this is my vector A, this is my vector B. मुझे पूछा गया है ये एंगल, रिजल्टेंट मेरा परपेंडिकुलर टू ए ही होना चाहिए, तो ये मेरा रिजल्टेंट परपेंडिकुलर हुआ. Can I take alpha as a direction of resultant with the vector A? कुछ याद आ रहा है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या पढ़ा है ना? तो तुमने क्या पढ़ा था, डायरेक्शन क्या था? तो तुम क्या बोलते थे सर, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्या फॉर्मूला था? b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? क्या ये क्लियर हुआ? तो क्या मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ टू गेट माय आंसर? क्यों नहीं सर? तो देखो अभी मैं लिखता हूँ tan अल्फा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू व्हाट, b sin थीटा अपॉन a plus b cos theta, and theta is the angle between vector and vector b. लेकिन स्टूडेंट्स मुझे बताओ अल्फा कितना है? सर अल्फा तो 90 डिग्री दिया है. स्टूडेंट्स व्हाट इज tan of 90 we consider? Infinite. Sure, that is 1 by equal to 0. b sin theta upon a plus b cos theta. Students, what is a plus b cos theta? अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले तो what exactly a plus b cos theta क्या हो जाएगा? 0. देखो आ गया ना तुम्हारा आंसर. तो what exactly b cos theta? minus a. So what is cos theta? Minus a by b. What is a by b का ratio? Minus half. Theta which angle? Theta which angle? 120 degrees. 120. Is this clear, students? Yes, sir. Is it clear with everyone? All this? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, Shall I sir. erase this now? Shall I erase this? Yes, sir. Sir, Hmm. sir, in this case, we knew that alpha was 90 degrees. So we could find the angle between B and R. Yeah. It would be Of course. 30. But we don't know theta now. We don't know theta. This would have been theta minus 90. और फिर इसका component ले लो. Yes, sir. That is what I was talking. That's fine. Doesn't matter. That what you said was absolutely correct. Okay, the next one, students. Given to you for the vectors A and B. Now, if you look at the diagram, students, this is the diagram given to you. This is vector. This is x-axis. This is y-axis given to you. Okay, and vector A is given to you, forming an angle of 53 degrees with the negative x-axis. This is origin. Okay. Another vector B is given to you along positive x-axis. Now, students, have given to you is for vectors A and B as shown in the diagram, if the resultant sum of A plus B lies along the y-axis, yani the resultant is lying along the y-axis. Okay,
lies along the y-axis, and magnitude of vector B. Magnitude of vector B is equal to 12 units. What is the magnitude of vector A? पूछा गया है. Options are 25, 20, 15, and 12. So 20. 20. Now I want a different person to answer, not the one who are answering consistently. Yashovardhan is posting his answers. Okay. Anybody else? Ashutosh is answering. There's other two guys also answering. There are almost 4 people are responding. What about the rest? Anyone? Absolutely correct. Again, I want somebody else to answer. To unmute yourself. Okay, fine. Now, one who knows the answer, can you see any similarity between the previous problem and this problem? Yes, sir. Yes. दोनों सेम है, दोनों ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है. अगर तुमने ध्यान से देखा होता, yes, 3, 4, 5 is a triangle, absolutely correct. अगर तुम ध्यान से देखोगे हमारे डायग्राम को, स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट्स. तुम्हें मैंने बनाया था, ये वेक्टर ए है, एग्रीड. वेक्टर ए है. वेक्टर बी, अगर मैंने बोला कि वेक्टर बी इस तरफ जा रहा है और एक रिजल्टेंट परपेंडिकुलर ऐसा आ रहा है, तो मैंने क्या बोला, इसको एक्सटेंड करो ना. अभी स्टूडेंट्स देखो मेरा डायग्राम, अभी रिजल्टेंट इस तरफ गया. ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस में दिया था. अभी मैं इसको मैं इरेज कर देता हूँ. Now look at this diagram, students. Look at this diagram and this diagram. Is it different? नहीं सर. No, sir. ये आपका B के, ये A की जगह पे B आ गया. ये जो B है उसकी जगह पे क्या आ गया? A आ गया. रिजल्टेंट यहाँ पे भी परपेंडिकुलर था, तो रिजल्टेंट यहाँ पे भी परपेंडिकुलर और एक्सिस पे, लेकिन परपेंडिकुलर टू B है क्या? वन द सेम. और तुम्हें क्या दिया है? मैग्नीट्यूड ऑफ B दिया है, A पूछा गया. सिर्फ वो है कि वहां पे तुम्हारा 30, 60, 90 ऐसे एंगल जाते हैं. यहाँ पे क्या दिया? 53 डिग्री. दिस वाज द ओनली ट्विस्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. लेकिन प्रीवियस और ये क्वेश्चन दोनों सेम था. यानी स्टूडेंट्स, जो पहला क्वेश्चन जिसको नहीं आएगा ना, वो यहाँ पे भी लूज करेगा मार्क्स. जिसको इसके पहले वाला नहीं आया, दिस इज हाउ द क्वेश्चन पेपर्स आर. अगर पहले वाला नहीं तो पीछे वाला भी नहीं आएगा. फिर अगर पहला वाला आएगा तो ये 110% आना चाहिए. It's only that the 53 degrees is given to you, and that's what Yashovardhan said. It Pythagoras triplets में 3, 4, 5 आता है. Yes. Now can anybody tell me how to go about this? Sure, we can just solve this by trigo. Yes. Let us say this is 37 degrees. This is 53 degrees. So this is 3, this is 4, and this is 5. Okay. Now. So sir, when the 53 degrees is near, means the adjacent side to 53 degrees is the shortest side. So here also it would be the same way. So our vector B is 12 units, and so it is multiplied by a scalar of 4. 4. We'll also hypotenuse by 4. You can multiply by 4. So I can consider in that case 4 5s are. And देखो ये तुम अगर देखोगे ना तो simply तुम्हारा 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है. I getting it? Harsh, I saw you. Okay, your eyes are so swollen. You got up from your sleep and directly sitting onto the couch. Very good. But still you are responding. Good. Okay, vector B. The magnitude is 12 units. Magnitude of A पूछा गया. So students, what we said is, you know, अगर तुम्हें ये 3, 4, 5 आ रहा है students, that's what you're getting it. And B is equal to how much? So B का ये है multiple. Getting it? We consider in this case. If I'm going to consider it's a multiple of 4, we can consider in this case. So simply you can get your answer accordingly. So 5 was 20 we can consider. और दूसरी तरीके से देखोगे तो 53 है, ये 90 है, तो कितना होगा? 37 होगा. Agreed. I want to go for modulus of A. We consider. अगर मुझे modulus of A चाहिए, I getting it. I have given the 53 part of that. ये मुझे 12 दिया हुआ है. So which angle gives me relation with adjacent and hypotenuse? तो मुझे सर cos of 53. So that is adjacent upon hypotenuse. Cos of 53 क्या होगा students?
Cos of 53 Sir, क्या होगा? 3/5. 3/5. 12 by A. So 3 4s are. So can I say it's a multiple of 4? What is said earlier? So A is equal to how much? 20. 20. Multiple of 4 directly to my answer दे देता है. Getting, and this is how the solving process is. I just shifted this vector parameter itself. Is it clear, students, all of you all? Yes, sir. Okay. Can I erase this? So wait a minute. Come on, Dharmik, Harshvardhan, Lakshya, Noha, Richa, Tanay, Tanmay. Sir, I have sent the answer. Vyom has left in that case. ऐसे क्या कर रहे हो? Answer दो. Sir, I have sent the answer. अच्छा, you have sent the answer. I didn't see it actually. Wait a minute. Yes. Very good boy. I didn't see it. Shall I erase this now, students? Yes, sir. Look at the next question, students. Given to you as if P, Q, and S are the 3 vectors given to you, students. Okay. Vector P is equal to 12y plus 12j. Okay. Vector Q is equal to 2y plus 4j. And vector S, students, is given to you is minus 2y. The question asks us find out the magnitude of P plus Q plus S. Options are given to us 12 root 2, 16 root 2, 20, and 10 students. Yes, anybody? 12 root 2, 16 root 2, 20, and 10. Harsh has got the answer. Anybody else? Anybody else? Please. Sir, Now, I 20. don't want to unmute. I don't want to. Just try to post your answer. Even Amani has got the answer. Good. Even Noah has got the answer. Very good. So why don't you all reply, Noah and Amani? What are you doing? Sir, I've been replying, sir. Okay, fine. Yes, Amani, can you tell me how to go about? Can you unmute yourself and answer? I actually took the sum of like 12i plus 2i minus 2i and then Yeah, I can. What exactly I'm getting it? 12 plus 2, 14, it so that's will be 12i. and then over there with j cap the same thing, it will be 16. And then I took the modulus of both of them, which will be like root 12 square plus 16 square. So why you're sounding so low? Why are you sounding so low? You answered so well in that case. That's 144 plus 16 square is how much? 256. What's your answer? 400 root 400, which is 20. That is 20. Can you tell me what exactly this resultant is actually speaking about? Are they orthogonal vectors? These vectors, are they orthogonal? Yes, sir, they are orthogonal. Did I ask you, Harsh? एक punch देना चाहिए तेरे मुंह, एक punch देना चाहिए, है ना? Are you Amani? Are you Amani? Harsh, ऐसे क्या कर रहा है? Sorry बोलते Amani को. Okay, fine, that doesn't matter. So of course they are 3 orthogonal vectors mutually perpendicular to each other, and you have to find out the resultant of these are 3 vectors, and these 3 vectors are students. These are the 3 vectors, and they are 3 vectors along the 3 sides of a rectangular parallelepiped. और तुमको पता होगा अगर सपोज तुम्हें पूछा गया what is the length of the longest rod which can be fixed, of course तुम लोग ने exactly ऐसे आइडेंटिकल तुम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम्स किया होगा. सरफेस एरिया वॉल्यूम क्यूबॉइड का. सपोज अगर मैंने तुम्हें एक क्यूबॉइड दिया जिसका लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, हाइट दिया है. A simple example, right now you are sitting at your home. शायद तुम्हारा अगर घर होगा एक हॉल अगर रेक्टेंगुलर पीस है, अगर तुम देखो तुम्हारा हॉल है जहाँ पे तुम बैठो, यस 9th स्टैंडर्ड अशोक सेकंड, या अगर तुम्हारा एक छोटा सा बेडरूम है जहाँ पे स्क्वायर शेप में है, और सपोज मैंने तुम्हें एक बाम्बू ला के दिया, ओके, एंड इफ आई टेल व्हिच इज द लॉन्गेस्ट बैम्बू यू कैन फिट इनटू योर रूम,
तो क्या करोगे, बॉटम कॉर्नर से टॉप कॉर्नर ऑपोजिट फेस का, that's the length of the longest rod which can be fixed into your home, under root L square plus breadth square plus height square. तो वैसे ही क्या होगा, under root L square plus breadth square and height square was 0. 0 square आएगा पीछे. तो that's a concept. ये concept तो तुम्हारा मैकेट हो गया. तो हमेशा ये ध्यान में रखना स्टूडेंट, जैसे आई जे के यहाँ आ गया उसका मतलब वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स पे चला गया, 3 ऑर्थोगोनल वेक्टर्स. तो वर्ड ऑर्थोगोनल का मतलब वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. 2 ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, दैट मींस इट कैन बी ईदर xy या yz या zx. 3 ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, दैट मींस x y z म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. Can I erase the students now? Can I erase? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Okay, next question, please. They've given you that vector A is 12 and vector B is equal to 5 and A plus B is equal to 10. That means they've given you modulus of A is equal to 12. Modulus of B is given to us 5. Modulus of A plus B is given to us 10. Students, question answers, what is the angle between? Asking the angle between vector A and vector B. The angle between vector A and vector B. Options are given to you. Angle less than 90, that is acute. Angle greater than 90, that is obtuse. Angle equal to 90 degree, that is they are mutually perpendicular to each other, and angle is equal to 0. Is it acute? Is it obtuse? Yes, Ashutosh has given the answer. Vansh has given the answer. Correct answers. 2 students have got it. Anybody else? No, very good. No. Yashuvardhan. Okay, very good. Yes, Yashuvardhan. Can you tell me how to go about? Can you unmute yourself? Can you unmute yourself? No, he doesn't want to unmute. He's posting the answer. Yes, anybody? Out of these students, anybody can give the answer? So when cos theta will come as negative, that's why. Yeah, what are you saying? What are you saying? Sir, whenever cos theta is negative, the angle is obtuse. Okay, cos theta. How do you prove that cos theta is negative? So we will take so A plus B is 10. So we will 12 in the under root. It will come mod of A square plus mod of B square and AB cos theta. Absolutely. This was the easiest question. ये रिजल्टेंट दिया है. ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर तुम्हें कोई वेक्टर A दिया है, वेक्टर B दिया है, उनका रिजल्टेंट वेक्टर R आया, तो मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से. अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता हूं तो सर ये होगा मैग्नीट्यूड, जिसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ A द होल स्क्वायर मॉडुलस ऑफ B द होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B cos थीटा. इसलिए स्टूडेंट्स मैंने बोला मॉडुलस में ध्यान में रखो, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस में दिया है. स्टूडेंट्स अभी A स्क्वायर B स्क्वायर रखते हैं तो इसको फिर यहाँ पे कनेक्ट करना भूल जाते हैं, हाउ टू कनेक्ट इट, इसलिए वो यहाँ पे लैग करते हैं. उनका ये डिस्कम्फर्ट आ जाता है, अभी सॉल्व कैसे करें. अभी तो ये सीधा हिसाब है, यहाँ पे तो दिया है, अरे सर ये तो 10 दिया है, तो यहाँ पे 10 लिख दो, क्यों नहीं. अंडर रूट ये क्या है, ये तो है 12, तो 12 स्क्वायर की 144 प्लस ये कितना है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच 25 प्लस 2 इनटू व्हाट 12 इनटू 5 इनटू cos ऑफ थीटा. मुझे थीटा चाहिए क्योंकि मुझे एंगल पूछा गया है. अब मुझे रूट को हटाना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू ये कितना होगा 169 agreed plus 12 5s are 60 into 2 120 agreed. Cos theta, can you get the value of cos theta now? Is it negative? Is this negative, students? Yes, sir. negative in that case. ये तुम्हें यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा -69 आ जाएगा,
divided by 120 is equal to cos theta. So theta is negative. So what exactly angle should be? Obtuse. Sir, more than 90. Is this clear, students? Yes. Yes, sir. Second way you can consider is if the magnitude, if the magnitude, if I look over here, if the magnitude is less than, please pay attention. If the magnitude of resultant is less than the sum of magnitude of the two vectors, then the angle between the two vectors will be obtuse. ये अभी ये होगा, ये क्या होगा ना, ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ सिनेप्सिस होगा, यानी ये डायरेक्ट अप्रोच, ये फिर तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं होगी, ये अगर तुम ध्यान में रखना शुरू कर दो। अभी स्टूडेंट को बताओ, चलो मैंने अभी तुम्हें ये दिया है, if the resultant of the two vectors is greater than this, चलो तो क्या आंसर होगा? Sir, acute. Acute angle. Agreed? Yes, sir. Agreed. That's what it is. So this is what you have to keep in mind. Less than and greater than. Can I erase now, students? Yes, sir. Sir, we could solve this by taking different cases also, no? Like at 0 degrees, the value would become 17. At 180, it would become 7. And at 90 degrees, it would be a Pythagorean triplet, so 13. So its value reduces as it becomes obtuse. Absolutely. Absolutely. ये तुम्हारा when you start drawing the diagram, तभी जाके तो तुम्हें ऐसा questions भी आते हैं, resultant less than a plus b, greater than a plus b, equal to a plus b, वैसे भी तो MCQs आ रहा है. You getting it? Yes, sir. Sir, can you explain how cos theta is greater than 90? That last part I am not understanding. ये देखो 100 minus 169 होगा, तुम्हारा minus 69 upon 120. अभी मुझे बता cos of theta is what? Is it positive or negative? Negative. अभी मुझे ये बताओ, when you try to go for angles, okay? When you try to go for angles, x-axis and y-axis. That's not funny, yeah. Whose mic is on? The people at home in the early morning, 9 o'clock, they are enjoying. Please pay attention, students. If I go for x and y, if I consider, please pay attention. How to go about the angles we consider. And अगर तुम्हारा cos theta negative आता है, उसका मतलब what is an angle? Please pay attention. How to remember? All angles have to be considered. I told you very clearly with respect to the positive x-axis. That means all these angles are measuring what direction? Anti-clockwise. 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 Now, when you look at the quadrants, this is the first quadrant, this is the second quadrant, this is the third quadrant, this is the fourth quadrant. अभी तुमने जो basic maths में किया है, if I want to get the angle, just remember the concept: add sugar to coffee. कैसे याद करोगे? Add sugar to coffee. ये एक का मतलब क्या हुआ? All trigonometrical terms के जितने भी angles वो सारे positive आएंगे. यानी अगर suppose मैंने sin of angle मैंने निकाला, I getting it? And if I'm getting a positive answer, that means it'll be all acute considered. सारे sin, cos, tan, cosec, sec. लेकिन अगर मैं second quadrant में जाता हूँ, students जानते हैं ना, add sugar का मतलब सिर्फ sin value, sin के angles and cosec we consider. सिर्फ यही positive होंगे, सिर्फ यही positive होंगे. तो ये बताओ, अगर मुझे आंसर negative मिल रहा है, तो what is cause of that particular answer will be? यानी मेरा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, इन दैट केस व्हाट एग्जैक्टली कंसीडर नेगेटिव, इन दैट केस व्हाट एग्जैक्टली कंसीडर. Thank you. मेजर कहां से हो रहा है? मेजर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. एग्रीड? Yes, sir. Students, don't take these studies as a study, students. ये ध्यान रखना. ये जो टाइप का studies है ना, students, you're not doing an ordinary studies. I'm telling you very clearly, students. Those who are into the sessions, okay, those who are into the lectures, and those who are attached with IIT and Hub,
ओके, ये जो कुछ भी स्टडीज हो रही है ना स्टूडेंट्स, ये इट्स नॉट द स्टडीज ऑफ योर एचएससी लेवल इन एटलीस्ट, यस उसका लेवल हायर है। इसको ये स्टडीज को यू ट्राई टू वर्क आउट लाइक अ गेम, एक गेम की तरह उसको खेलो ना, एंजॉय करते हुए करो, और कभी एंजॉयमेंट आएगा जब तुम समझोगे, उसके ऊपर वापस प्रैक्टिस करो। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये स्टडीज के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए प्रैक्टिस के अंदर। डोंट रन बिहाइंड मार्क्स, आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, मार्क्स को सेकेंडरी रखो, कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनते रहो। दूसरा है, जो मार्क्स तुम्हें मिल रहे हैं फील सैटिस्फाइड कि नहीं आई एम एबल टू, क्योंकि जितनी एफर्ट डाली उतनी मुझे मिल रहा है। तुम कभी रिजल्ट आएगा, अरे यार मेरी 3 एमसीक्यूज के अंदर नेगेटिव आ गया यार, यहाँ पे मैंने क्या होता तो मुझे और मिल रहा, तो उसमें इम्प्रोवाइजेशन करो। और ये स्टडीज जो है ना स्टूडेंट्स, 2.5 साल की स्टडीज में कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफ को सडन मत बढ़ाना, जितना तुम सडन ऊपर जाओगे ना उतना ही ड्रॉप भी होगा, ये देख आगे भी है, यानी ये ग्रेजुअल प्रोग्रेस है, बिकॉज इट्स अ 2.5 years, इट्स नॉट अ कोर्स ऑफ 6 months 8 months कि चलो हो गया खत्म हो गया, नहीं, इट्स नॉट। एक एक चैप्टर, यू वोंट बिलीव स्टूडेंट्स, तुम्हारा जो ये चैप्टर्स ही चल रहा है, चलो वेक्टर्स चल रहा है, वो चल रहा है, कितने घंटे तक चला मुझे ये बताओ, हाउ मेनी आवर्स, इट मस्ट हैव टेकन सो मेनी आवर्स टू फिनिश बाय सर्स। जब भी पढ़ाने वाले इतने घंटे लेते हैं, तो पढ़ने वाले how can they finish the entire vectors in 2 hours? How can you expect that you finish it in 2 hours and 3 hours? Think in that manner ना। अगर पढ़ाने के नंबर ऑफ आवर्स 15 घंटे है, तो इक्वालेंटली तो मिनिमम 10 आवर्स दो उसको, मोर देन 50%, अराउंड 70% ऑफ आवर्स यू गिव इट, तो तुम कॉन्क्रीट बनोगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे यही है, आगे जाके तुम्हें जितने भी चैप्टर्स आएंगे सबके नंबर ऑफ आवर्स उतने होंगे। तो पढ़ाने वाला अगर इतने घंटे दे रहा है, तो पढ़ने वाले को तो ऑलमोस्ट इक्वल, उससे ज्यादा देना चाहिए था। फिर भी बोला 70-75%, तो क्योंकि तुमने समझा है लेक्चर्स को, समझने के बाद में तुम करोगे तो टाइम कम हो जाता है, और फिर सेकंड टाइम रिवीजन करोगे तो जो 75% तुमने टाइम दिया था वो फिर 50% हो जाएगा, थर्ड टाइम रिवीजन करोगे तो 25% हो जाएगा। और अभी तो एक चैप्टर की टेस्ट लिए, मेजर टेस्ट, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली। आगे जाके when you have 3 chapters and 4 chapters and 5 chapters coming together, that is a true game. वहां पे पता चलेगा who's the one who's scoring it over there. तो उसको बिल्ड अप करो, वहां पे वो टारगेट रखो, मुझे वहां पे स्कोर करना है और एक चैप्टर में तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल फील कंफर्टेबल विद, एंड दिस इज समथिंग मस्ट हैव इन स्कूल आल्सो। स्कूल्स में भी ये हुआ होगा तुम्हारे साथ में, 9th या 10th की एग्जाम्स है, जब एक चैप्टर के एग्जाम्स होते थे तो 20 में से 17 मिलते थे, 18 मिलते थे, 19 मिल जाते थे। लेकिन वो जब 4 चैप्टर्स की होती थी तो 40 में से आगे 25 मार्क, 30 मार्क, 32 मार्क। ये नहीं होना चाहिए, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। एक बार मेंटेन करना, एक बार मेंटेन करना कि अगर मैं कोई एग्जाम दे रहा हूँ, अगर मैं एक एग्जाम दे रहा हूँ तो मेरा टारगेट होना चाहिए कि मुझे किसी भी हाल में 70% मार्क्स, 70 या 80% मार्क्स मुझे लाना है। अगर वो 80% मार्क्स या 75% मार्क्स अगर तुम कंसिस्टेंट रखते हो 3 एग्जाम तक या 4 एग्जाम तक, दिस इज द बेस्ट साइन, rather than getting 90% in one of the exams and then dropping to 60 and then coming back to 70. No, वो average हुई हुआ। ये हमेशा ध्यान रखना, ये स्टडीज का 2.5 साल की स्टडीज है। Okay, there will be lots of ups and downs, okay, and nothing to get worried, no need to go into shell, enjoy your life, खेलो। अगर नीचे जा नहीं सकते हो तो tell your parents to play cricket with you, घर पे खेलो, doesn't matter in that case, लेकिन स्टडीज को सिंसियरली करो, don't take it as a burden, that's what I'm telling you very clearly. Okay, the next one, students. Next question speaking about is what, they've given to you is that for the diagram, if I happen to show the diagram in this case, they've given you diagrams consisting of 3 vectors, okay, along x, y and z. एक यहाँ पे दिया f2, okay, एक यहाँ पे दिया f1, okay, ये दिया है 60 degrees, और एक थर्ड वेक्टर यहाँ पे दिया, ठीक है। This is 5 units. This is also 5 units. Sorry, this is 30 degrees. Okay, this is the diagram, students. For the diagram shown below, if the resultant sum of the forces F1, F2, and F3, the resultant F1 plus F2 plus F3
is equal to 0. That means all three are what? Coplanar vectors. Are you getting it? Concurrent we consider lying in the same planes. Are they of same order? Yes, they are. They are Yes. all of same physical quantities. All they are of same and are they of same order? Yes. अगर मैं इसका enclosed figure बना दूँ तो हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है? I can consider that case. So now the asking is what? If F1 and F2 are both of 5 newtons given to you, then find the resultant F3. Come on, tell me. Fastest and the easiest way to get it. -10. Pardon? No, I was putting it 5 Newton. Sir, we had to find F3 bar, no? Yeah, F3 bar. F3 bar. Bolo. Of course, 5√3. That's a correct answer, Harsh. See now the answers who have summaries posted. Yes, of course, Lakshya. Correct. So we are no, my dear, it's 5√3. Dharmic -10 here, 5√3. Yes, Lakshya. Can you explain? Can you explain, Lakshya? Sir, it can be solved by that method, na root a square plus b square plus 2ab cos theta. हाँ, मुझे नहीं पता लेकिन उसका रिजल्टेंट कैसे तुम बताओगे कि F3 आ रहा है? Yes, sir. How do you get the resultant as F3? कैसे करोगे तुम? You said it very clearly. अगर तुम्हें निकालना है F2 इन दो ये 30 है तो ये 60 आ गया. Yes, so what sir. is trying to find out? You know what exactly Lakshya is trying to find out? इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दिया. तो दांत he's finding out resultant का magnitude. So he's saying it under root सर ये होगा 5 square. Please everybody look over here plus 5 square plus 2 into 5 into 5 into cos of 60. That is half. Cancel हो जाएगा. So what is the magnitude of resultant we consider? So ये होगा 25 plus 25 plus 25. तो resultant कितना होगा? 75 यानी 5√3 होगा. 5√3. लेकिन लक्ष्य मेरा ये आंसर ये है कि अगर ये तो लेता है तो इनका रिजल्टेंट तो यहाँ पे जा रहा है ना 5√3. It's the diagonal of the parallel form. मुझे ये पूछा गया है तो तू तो ये बता रहा है. सर वो क्वेश्चन में ऐसा लिखा था ना कि F1, F2 and F3 is 0 और मैग्नीट्यूड और F1 और F2 का 5 दिया था ना 5 न्यूटन. तो देख लक्ष्य सी ध्यान से सुन तो बहुत क्लोज है बहुत एवरीबॉडी सी सामने आंसर है. एवरीबॉडी लिसन केयरफुली. मुझे बताओ अगर मैं F1 F2 लेता हूं तो कहने से F1 plus F2 इज माय आंसर R बार. ये क्लियर हुआ. ट्रायंगल ऑफ इक्विडिस्ट्री ये क्लियर है. उसका मैंने मैग्नीट्यूड निकाल दिया. ये सबको क्लियर है. अगर मैं दो वेक्टर्स लेता हूं तो उनका रिजल्टेंट मुझे मैग्नीट्यूड में ये मिला. वेक्टर फॉर्म में ये लिखा. क्या ये क्लियर है सबको? एग्री? Yes, sir. अभी पहले वाला देखो. फर्स्ट वन क्या लिखा है? सर ये F1 plus F2 plus F3 is equal to 0 लिखा. तो कैन आई रन F1 बार plus F2 bar. Can I run this as minus F3 bar? क्या ये सही हुआ है ना पहले इक्वेशन को? तो कहने से अरे हाँ सर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गए तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हुआ. उसका मतलब सर आप ये बोलना चाहते हो कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट मैंने यहाँ पे निकाला है तो F3 क्या है सर? F3 एग्जैक्टली उसके डायरेक्शन ऑपोजिट में होगा. मैग्नीट्यूड सेम होगा. स्टूडेंट्स F3 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? F3 का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R√3. इसलिए तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है 5√3. लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन इज ऑपोजिट. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Is this clear everybody? Yes, sir. Yes, sir. That's why your answer is 5√3, but the direction opposite. Understood, Lakshya now? Clear? Yes, sir. Okay, shall I erase this now? No, sir. सर वो -5 में आएगा. हाँ? नहीं सॉरी. Can I erase this now? Sure.
Sir. हाँ बोलो. Sir, this is the similar to that a plus b plus c is equal to 0 1, no? Absolutely ना. कोपलाने वाले पहले भी किया था. वही तो है. Summation of all the forces enclosed figure. मैंने तीनों forces भी बताए थे. सर इसको हम ऐसे शिफ्ट करके ट्रायंगल के फॉर्म में कर सकते हैं ताकि इजी हो जाए. तुम्हारा बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है. तुम्हारा साउंड बरोबर क्लियर नहीं है. क्या बोल रहे हो? सर ये जो लाइंस है ना F1 F2 F3 उनको शिफ्ट करके हम लोग ट्रायंगल के फॉर्म में ला सकते हैं. Why not? Why not? You can consider. सर तो उसमें एंगल 120 डिग्री आएगा ना. एंगल क्या आएगा? 120 डिग्री. तो अगर तुम रिजल्ट तुम इसके बारे में बात कर रहे हो ना 120 यानी इन दोनों के बीच में एंगल 60 है इन दैट केस. और ये तीनों फोर्सेस भी कंसीडर डिफरेंट भी कंसीडर. ऑफ कोर्स तुम्हें √3 आ रहा है ना. 5 भी कंसीडर दैट केस. दो मैग्नीट्यूड 5 और दूसरा √3 आ रहा है. हां सर. Sir, is there going to be another lecture of discussion about this? Pardon? Sir, is there going to be any other lecture of major test discussion? No, because why? What happened? Sir, as there are only 15 minutes left and we have only completed 10 questions. So there are 12 only. There are 2 more questions. Okay, let's go for the rest students. Please wait. Next one. Now we look at the next question, students. What exactly I've given to you is consider the vectors in the diagram a minus b plus c equal to 0. Suppose if I happen to go for the integer type, okay, second part of it I'll consider. तुम्हें ये दिया है. ये तुम्हारा कौन सा? I'll consider y. Okay, this is x given to you. This is y given to you. Okay, this is the second question of the integer type I'm talking about, students. This is vector a given to me. Okay, vector b is known to you. This is 4 units. This is also 4 units. This is 60 degree, and this is also 60 degree. Vector c is acting along negative axis. Now they've given to you, consider the vectors in the diagram below. If you carefully look into the diagram, this is 4, and this is 3 given to you. Question asked is, find out the modulus of a minus b plus c equal to how much? And it's an integer type. Yes, students. Students, I have hardly, the questions which are given to me is hardly 1 more question. That's all. I haven't, they gave me hardly 12 questions. This was the only paper I'm having it. Sure, but we had the differentiation part also, no? Sir, calculus wala. Calculus part also. Calculus part is not there with me in that case. That's the reason major because I don't have it. I don't have that particular part of it. The question paper is not there with me. Calculus part is not there with me. Later on, when I'll speak to sir, if he gives it to me certainly, we'll work it out in the next session. Don't worry about that. Okay. Okay. Can you tell me the answer for this? Yes. I want to find out the magnitude of a minus b plus c equals to how much? What will be the answer? Anybody? Has anybody solved this question in the exams also? None of you all. Shall I solve it for you all? Shall I give you the solution for it? So can you give us 2 minutes to solve? Okay, now the answer is now. देखो, तुमने पूछा a minus b plus c. So what do you do, no students?
start resolving this vector A into two components, horizontal और vertical. इसका x और y component निकाल दो, b का भी x और y निकाल दो, और c तो नेगेटिव एक्सिस पे है. तो अगर तुम वेक्टर c को लिखोगे स्टूडेंट्स, तो वेक्टर c को कैसे लिखोगे? सर वेक्टर c होगा मेरा y एक्सिस है, तो कहने से -3 j कैप होगा. क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes. अभी देखो वेक्टर a का मॉडुलस क्या 4 है, ये 60 डिग्रीज है. तो कैन यू टेल मी व्हाट एग्जैक्टली इट्स अलोंग x एक्सिस? अलोंग x एक्सिस क्या होगा? तुम बोलोगे सर दिस विल बी 4 मैग्नेट 4 cos 60 I cap. What is cos of 60 students? Sir, Half. half. So 2 half. So ये 2i क्या हो जाएगा? cap. 2i cap. 2i Can I cap. say vector A can be written in terms of 2i cap along x axis? Can I find its component along y axis? Yes, तो ये sir. क्या हो जाएगा? 4 2 root 3. sin 60 j cap. What is sin of 60 students? Sir, root 3 by 2. Root 3 by 2. 2. So हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? Plus 2 2 root 3. root 3 j cap. J cap. Is this clear? yes, sir. वैसे B का निकालो. 4 units दिया हुआ है. तो B का what exactly the component along x axis I'll consider will be? Sir, it would become 4 cos 60. 4 cos 60, लेकिन which? Minus I Yes. cap. And cos of 60 is how much? Sir, half. So it तो would ये be क्या होगा? minus 2 I -2i cap. क्या आएगा? Agreed. B का. Is this Yes, clear? sir. And vertical component क्या होगा तुम्हारे इसका? तो Sir, ये 2 होगा root 3. 2 4 root 3. 4 sin 60 j cap. तो इसका क्या होगा? Plus 2 root 3. That means I've got all the values. Vector A in terms of unit vector form, vector B in terms of unit vector form, vector C in unit vector form. क्या पूछा है? A minus B plus C. So now can I say what is A minus B plus C? So A is this 2i plus 2 root 3j plus 0k minus B. So can I say I have to subtract this in this case? So minus Yes, into sir. minus will be what? Plus 2i. ये plus 2i हो जाएगा. Minus 2 Plus root into 3. minus 2 root 3j plus 0k. And 4i minus 3j cap. Pardon? Yeah, so that is minus 3. ये तुम्हारा minus 3. Sorry, this is minus 3j cap. Now if I solve it, what exactly be? The cancel हो गया. What Sir, exactly? 4i cap minus 3j cap. Okay, so what exactly A minus B plus C will be equal to what? 4i. 4i cap B minus 3j cap. So what is the Sir, modulus it will of be this? 5. If I have to go for 5. 5. it will be under root 4 square plus minus 3 the whole square. That will be under root 16 plus 9. That is 25. Answer will be 5 units. Is this clear with everyone? Friends, is it clear? So without taking unit vectors, can we shift Why B? not? Can we shift B to the opposite side? जिससे minus B हो जाएगा. Then we find the resultant of A and B, A Why plus not? B, sorry, A minus B, and then A minus B का resultant with C निकालेंगे. तो वही कर रहा है. ये देख मैंने वेक्टर ले लिया. अगर मैं वेक्टर C को शिफ्ट कर दूं करके, तो मेरा इन दोनों का फिर तो सबट्रैक्ट कर रहा है B से. Same आएगा आंसर. You're trying to do the same. It's only by shifting the vectors accordingly. Okay, sir. Yes, sir. It's one and the same. Okay, can I erase this, students? Yes, sir. Yes, sir. Last lectures, were you in the group, students? Were you in the group in the last lectures? जो Thursday था, last Thursday, were you in the lectures of mine? Yes, sir. हाँ, तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स ने बोला था कैलकुलस कर दिया उन्होंने. तभी जाके and I didn't have the paper because it wasn't given to me at all. मुझे सिर्फ ये अपना वेक्टर्स का दिया था. लास्ट टाइम स्टूडेंट्स को भी कि हम लोग ने कैलकुलस कर दिया है करके. It was told during that time. And to me, I've got only the question paper of the calculus part of it. Sorry, I've got the paper only of the vectors part of it.
And last time it was when the discussion with me, it was because our calculus का already हो चुका है by some other sir of the discussion of the major text. That was अच्छा. So I never knew about it. I never knew, and that's what I asked Gyanendra sir also earlier. So can I have a question paper of that? He said it's what we did in the last lecture. It was the same in that case. In the last lecture, I picked up with the vectors part of it. But sir, our paper happened after that. On the no, I never knew that. I never knew that. Doesn't matter. Okay. We can speak. I'll speak out to sir in that case. होगा तो next session में रखेंगे. No problem in that case. Don't take sessions in that case. Okay. Take a chill pill. Okay. The next question given to you. Class. ये भी एक integer type का है. It is said that the boat is first transported via road on land through a displacement of 2 kilometers due north. Now, please try to understand. They've said that a person is going through via road, okay, and is getting a displacement 2 kilometers due north. Which can I say? Vector A is 2 kilometers due north. So, how do you consider north in this case? If I consider this is north, this is south, this is west and east. Agreed. So, can I say if I happen to consider this case, north means can I say I can write on as 2j cap. Agreed. Yes, sir. Agreed. Then the person travels by boat through a displacement of 2 kilometers towards west. Sir, it would be minus 2 I cap. Okay, so now he travels 2 kilometers due west. So how do you consider in this case? Sir, minus 2 I cap. Minus 2 I cap. Because see, I read the statement. In the boat, then he moves by boat through a displacement of 2 kilometers. 2 kilometers where? Towards west. Towards west, that means minus 2 I cap. Agreed. And then it is said, followed by a vertical displacement straight up. Vertical displacement straight up of 1 kilometer by helicopter. What does that mean? Sir, K cap. 2K, 1K cap. And it's 1 kilometer. So can I say it's plus 1 kilometer K cap. So can I say now, if I say A plus B plus C, what exactly I'm getting it? So this will be 2J minus 2I plus K we consider. Agreed? Yes, sir. Question asked is, what exactly the magnitude of this we consider in kilometers? So now, can you get an answer for this? Sir, 3. Of course. ये क्या होगा? Again, 3 orthogonal vectors we consider mutually perpendicular to each other. So 2 square क्या होगा? 4 plus in bracket minus 2 the whole square, वो भी 4 होगा. Plus 1 हो जाएगा. So 4 plus, we consider 4, 8 and 1, 9, root of 9. What is root of 9? 3 kilometers. Instance, when you're looking at this question is actually speaking about what, you know? They're trying to say as there are 3 vectors. Please pay attention to this. पहला तुम गए 2 kilometers due north. अभी ये सोचो, with respect to you, this is north, south, ये west or east है. Horizontal का consider. So now suppose first you went 2 kilometers due north की तरफ. फिर वहां से तुम कहाँ गए? 2 kilometers you went towards west. तो तुम्हारा ये इंक आ गया 2 kilometers due west with respect to you. और फिर यहाँ से तुम कहाँ गए? 1 kilometer ऊपर की तरफ गए. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? लुक एट द डायग्राम. पहले तुम नॉर्थ की तरफ गए, फिर तुम वेस्ट की तरफ गए, और फिर तुम ऊपर चढ़े 1 किलोमीटर. अभी तुम्हें रिजल्टेंट पूछा है, तुम बोलोगे सर ये तो तीनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए. कैन आई शिफ्ट द 2 वेक्टर्स पैरेलल टू इटसेल्फ? हाँ. तो कभी रेड वाले को मैं पीछे खेल ले रहा हूँ. अगर रेड वाले को मैंने पीछे ले लिया तो साथ में ब्लू वाला भी पीछे आ जाएगा. Can I say all 3 are mutually perpendicular to each other and they are at origin we consider? So can I say these are 3 orthogonal vectors? What is the resultant of this 3? Under root 2 square plus 2 square plus 1 square. Length of the longest rod which can be fit in a cuboid. Answer is 3 kilometers. Is this clear, students? Yes, sir. Yeah. Sir, in this case, I took the north one as Z, west one as X, and the vertical upwards as Y. Now, this is one more thing. The sign convention we consider, the position of the unit vector, that depends on the observer. Observer के ऊपर है. तुम north को तुम अगर सब north को तुम ऊपर लेते हो, south को नीचे लेते हो, aggregate, तो west तुम्हारी तरफ आ जाएगा. अगर मैं ऐसा खड़ा हूँ, north ऊपर ले रहा हूँ, south ले तो west मेरी तरफ आएगा, east मेरे सामने होगा. हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होगा ना नॉर्थ का, दैट विल बी ऑलवेज वेस्ट. एग्रीड? ऑलवेज लेफ्ट ऑफ नॉर्थ विल बी कंसीडर्ड टू बी वेस्ट इन दैट केस. दैट डिपेंड्स ऑन हाउ यू कंसीडर. अगर सपोज मैं ऐसे दे देता हूं, चलो मैंने ये डायग्राम ऐसे दे दिया,
अब देखो इसके हिसाब से क्या आएगा, नॉट ऐसे जाएगा मेरा थंब के हिसाब से, तो तुम बोलोगे सर इसको x लेता हूँ मैं, इसको y लेता हूँ, ये z लेता हूँ. So that's what you try to take. It doesn't matter in that case. Doesn't matter in that case. That depends on the observer. Okay, sir. Okay. Okay. So we wind up the sessions. Next lecture, whenever it is, we'll work out further. Okay. Don't worry about that. Yes, sir. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Bye, you. sir. Thank you, sir. Bye, sir. Perfect.